What's happened here? What's happened? What's happened here? Tell me why it's burned. Why? On that day. Oh, hello, here. Hello. You come, sir. On that day, the same people, worker of party, they burned this area. Tell me the stories about this burn. On that day, the murder of Mohtarma Benin Sahaba, people came here and they burned this area.
so many places they burned. Other criminals also with them on that day. परे तो हल मगर बिया जे ना हल छा टकरी कंदा मारींदा तो गाड़ी बिहण ज़ावे अच्छा ऐसे छोड़ो तेनवानी ने किसी भाई को बात कर सही ना मैं वो घर में वो मैं डीपीओ के दफ्तर करवा दूंगा अभी थोड़ी देर तक रात मैंने वो शादी भी नहीं मिला ये खुदा बच्चा ये उनको ट्रेनिंग के लिए आरपीओ से आरपीओ को मैंने मैसेज किया है वो कहता मैं करता हूँ उसको बोला हुआ ठीक है हाँ किसको खुदा बख्श दिया ना हाँ ये एक मिनट ऋषि भाई को बताया ना मैं भी आरपीओ को बोलूँगा ऋषि भाई ये आरपीओ को फोन कर रहा हूँ भाई जी सर मैं नाम से फोन करें नमाज के बाद आ रहे हैं साईं सलाम अलैकुम खुश बात ठीक ठाक मुझे पता है ठीक ठाक बाबा खुश है हाँ लाल सिंह साहब साथ भी हो ना नहीं चलती गाड़ी है हाँ मैं मेरे साथ साइड बात
सर मां फास साफ कर वेंदी भाऊ चयो त कॾहिं बि हलो न थियो त हलूं था पंहिंजो लशार हाउस को हलो उते उते गॾे ले हलंदा थोड़ी झंडा है कुछ है ले लो इनको झंडा दो यार झंडे दो जी सर बंदे नहीं के कहो कि वो हमारे फिके का सदर नहीं है ना मैं ले देता हूँ बंदेली जो है ना मेरे नाम भी लेगा उसके तोड़ता तो मैं तुझे 50,000 रुपये देता मैं खैर अपना तुड़वाया उसके लिए भी दे दूंगा तुझे ठीक है ना क्या So where are you going now? We're just going to. We are one of the Sardars, right, from a different tribe, the Lashari tribe. He's invited his people over to announce in our favor. So we're just going to go down to meet him. Thing doesn't stop. अमर भाई पीछे से कभी आवाज नहीं मारनी चाहिए पता ना मनुष्यत होती है पीछे से आवाज ना मारा करें वो है बंदे दूसरा हम लोग नहीं जरूरत नहीं है We're actually following the Sardar's vehicle to go to his house. What's your opinion on the elections about the Fair and fair. yeah, especially in this constituency, we have fears that the elections will not be free and fair. Number one reason for being that is that we have identified more than 37,000 fictitious votes. We call them doubling. Doubling means that they exist in more than one polling stations. The same ID card number exists in more than one polling station. So these records are about 37,000 which we have identified accurately. ID card numbers, polling stations, and on what page of the voting register can you find those cards. Now we've requested the Election Commission that in order for the elections to be free and fair, they should cross the duplicate records. Unfortunately, so far they haven't done that. The total number of votes which are actually ever casted are roughly less than 100,000. So if almost 37 to 40,000 are doubling votes, that means 40% of the votes that will be casted will be doubled. Therefore, what's the point? The elections cannot be free and fair in this particular constituency on the basis of the evidence that we have submitted. And these votes were registered and were used in the previous election also by the People's Party candidate. We have evidence to that as well, on record. You want to come through? Last question. Yes, sir. You are not afraid to make this kind of meeting with all the problem in the country and without... To be afraid? No, not at all. More than happy to be with the people. No reasons to be afraid. गलती की
मलक के जलसों में भी रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, मलक फास चुप रहो। जिंदाबाद। ये हमारे उसी आने वाले जो फर्ज हैं हम लोग, उनका इनका बहुत करीबी रिश्ता रहा है। पीछे मैं नहीं जाता हूँ शहीद अलामत पर मुख्तरन ये पता चलूँ इंशाअल्लाह ताला नाशाद कौम का वोट बैलेंस वोट है। ये वोट हमारा इंशाअल्लाह ताला आपके पास है। हमारे छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक, मरीज तक कंधे पर लेकर हम आपको वोट देंगे और हमारा वोट आपकी कामयाबी की निशानी होगी। अपने चीफ सरदार मोहतरम सरदार धनी तक अर्ज करूंगा कुछ इल्फाजात पेश करें। मोहतरम सरदार धनी गरीब खाने पे जो है अपने कदम रखे हैं, तो बड़ी बातें तो आपने खुल के पहले भी की है। मुख्तसर वक्त है क्योंकि नमाज पे भी नमाज का भी बहुत हो रहा है। मैं अपनी कौम से भी वादा करता हूँ, आपसे भी वादा करता हूँ। कौम से मेरा ये वादा है कि आपके हर दुख सुख में मैं साथ दूँ। यही वादा मेरा मेरे साथ के साथ है, उसके भी हर तकलीफ में मैं साथ दूँ। और इंशाअल्लाह हम किसी और सरदार की तरह या लीडर की तरह स्टेज पे भड़के नहीं मारते, न मारेंगे। हम सीधी तौर पे जो हम करके दिखाएंगे। इस वक्त हम कुछ भी नहीं कहना मकसद है, हमारी जो नीयत है हमारे दिल में है, तो हम कहते हैं कि हम कहें नहीं कि हमने ये किया या ये करेंगे। हम समझते हैं कि हमें कोई और कहे, खुद जो है मौका बोले कि ये काम आप लोगों ने किया है, ये हमारा इंशाअल्लाह ये होगा। मुझे उम्मीद है फार्मर साहब से, मोहम्मद मियां साहब। दोस्तों नहीं रहा हूँ और ओली में मेहरबान के अर्ज कंदुस कुछ इल्फाजत तव्हां जाडो पेश करे। मुख्तसर इहो लाचार क़ौम पुरअमन क़ौम आहे ऐं पुरअमन माण्हुनि सां रहण असांजो सुकून आहे। ऐं असां अवां सां इन करे रहिया आहियूं, असां अमन पसंदि आहियूं, अवां बि अमन जी ॻाल्हियूं कयूं। ऐं हींअर घुराईंदुसि पंहिंजे दोस्त फाज़ मलक साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियों को मैं इंशाअल्लाह जिंदगी भर का साथ है। इलेक्शन आने जाने वाली चीज है, हार जीत का फैसला अल्लाह की जात करेगी। मगर हम यहाँ बैठे एक वादा कर सकते हैं, एक कसम उठा सकते हैं कि सरदार साहब जहां आपका पसीना गिरेगा या इस कौम का पसीना गिरेगा, इंशाल्लाह वहां हमारा खून गिरेगा। जहां तक हो सका
के फजल से जिस गंदगी को, जिस जहाज से हम निकलें, जिस गंदगी को खत्म का मैं मेजबान तो नहीं कह अपने घर में बैठा हूँ, मेरा घर है ये, तो इसलिए सबका शुक्रगुजार हूँ जो मैंने वक्त भी हो रहा है। तो नमाज पढ़ी वापस अचे नमाज पढ़ने वाला वापस अचे जाओ रखो सुने रखो साफ कर दो ठीक है ना जी अच्छा हां हां आ गया हम लोग के लिए तो आराम होगा वरना 17 तारीख रात को बड़ी मूवमेंट होती गाड़ियों में। मैं आपको एडवांस में मुबारक दे रहा हूँ 20,000 की लीड से आप जीत रहे हैं। मैंने रात अपना एनालाइज जो किया है आपकी नजर आई है हाँ मैं अपने हिसाब से जो बैठा हूँ रात में एक्स्ट्रा है सिर्फ अरेस्ट करने की। जो वो आईडी कार्ड लेकर वहाँ दाखिल हो उसको अरेस्ट कर लो। अल्लाह की फजल से मेरा ख्याल है 10 ही अरेस्ट करेंगे मगर बाकी से भाग देंगे। शायद वो पहला एक अरेस्ट पहले अरेस्ट में बाकी सब भाग नहीं मोबाइल लगने में जितना टाइम लगेगा शायद 10 हो जाएंगे बाकी सब भाग जाएंगे। सर जब ये पोलिंग डे स्टेशन पे पहुंचेंगे ना हमारे पास लिस्ट है किन पोलिंग स्टेशन पे बोगस रजिस्टर्ड है। पता नहीं सर मुझे अंदाजा नहीं मुझे इतना पता है कि पोलिंग डे पे जो पोलिंग स्टेशंस नॉमिनेट किए गए थे लिस्ट आउट हैं प्रिंट आउट्स में जो आए हैं उन पोलिंग स्टेशंस पे एक्स्ट्रा फोर्स आर्मी रेंजर्स और वो अलग होंगे जो इलेक्शन डे की तैयारी के लिए नहीं है वो सिर्फ अरेस्ट के लिए है। एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस दिन फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता है उन्होंने बताया तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनको अरेस्ट कर लिया। वो कितनी पोलिंग है सर ये बनेंगे मैं तकरीबन 45 to 50 पोलिंग स्टेशंस प्लस इन 50 के लिए कह रहे थे अबाउट आई थिंक इन 50 पे 5 से 10 बंदे एक्स्ट्रा लगाएंगे वो फोर्स अलग है तो जहाँ पे ये बोगस वोट है जहाँ बोगस वोट है वहाँ पुलिस गला बैठ गया छापा जाते मुझे निजान है वो दाइन जो मसला है ना राजा सलाम दे अदा फोरू ना असा फोरू ना मॉडर्न फकीर जरूर है मॉडर्न फकीर जोरी ना हाँ मोहब्बत राजी खुशी था ना भाई जोरी तो जेका बाद में कोई जोरी न करे ना तो जोरी और करे तेरा करो बिल्कुल हाँ ये बैठा हाँ हाँ फाल साहब मेहरबानी करे छदो का कवरेज दीना को बड़ी खुशी दा पांडे छदो कंपनी पानी तो सोरा मोटरसाइकिल की बात बल्कि कल जब थे पंचायत में भी ना वहाँ भी कम्युनिटी के हवाले से भी जितनी भी कम्युनिटीज हैं प्रोग्राम इधर से आया ना सब के सब वहाँ एक सेंटर लोकेटेड है वॉल्ड सिटी टाइप कॉन्सेप्ट जो नहीं होता सिक्योरिटी के हवाले से तो वो क्या है कि हिंदू कम्युनिटी बना रही है तो मैं कहा वहाँ हमारे जलालपुर की बनी हुई है सर जबरदस्त है मैं कहा उसको करो प्रॉपर प्रोफेशनली बड़ा करें और वहाँ में प्रेस नहीं रखते हैं प्रेस का वैसे ना नहीं सारी नहीं लिस्ट है रेवेन्यू वाला नहीं था वो जानू सारी भी तो रिप्लेसमेंट सर हाँ बगैर उसको खींचा फिर तो दरकत न करना है मैं कहा इतनी जमीनें पड़ी क्योंकि नजर नहीं आती है खाया तो मौका से बात नहीं सर ये मसला है कोई मसला नहीं है जहाँ होगा कवर कर लेंगे आध घंटा अंदर अंदर तो कुछ फोन का मसला नहीं हुआ इनकार नहीं बताओ आज उसको क्रॉस करें ताकि 40,000 वोट तो वैसे ही कट जाएंगे 40,000 वोट कट जाएंगे कोई डालने आया तो पर्चा कटाओ अंदर उसके अलावा ऑब्वियसली जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके अपने एजेंट्स होने चाहिए और तगड़े एजेंट्स वेदर इट्स मिस्टर नसीर खानी साहब हैं अजीज अबड़ो साइड में सबको खतरा एक ही है कि मुकीम साहब की जो साइड है वहाँ पे खतरा लगेगा यही असल 25 पोलिंग स्टेशन है वही
जवाब आ गया। सबका कंसर्न यही है, हर कोई इसी बात से डर रहा है कि जी खोसों के इलाके के अंदर धांधली होएगी और हम सब लोग रगड़े जाएंगे, क्योंकि शहर में 77 पोलिंग स्टेशन है। 76 It's difficult, I agree, it's impossible. कितने पोलिंग स्टेशन बन रहे हैं जहाँ पर आपको 20-25 हज़ार How will you fight against the fake ID? The fake IDs. Yeah, how will you fight? See, what we've done is we've spoken to the district returning officer, and we've asked them. We're actually going to give them a list. These are the ID cards which are fake or duplicate records which exist on these polling stations. So per polling station, we will give them the list. That is the list for this polling station. When this when these voters, This police station? on these polling stations, we will have the police to verify the ID cards. Whoever is coming into the polling station, if he exists on that list, he should be immediately arrested. Okay, but I know that a kind of fraud is with the ID card of people who leave the country. No, that's not true. They create करे सब गंदे थे आप परवेज जी सलाह से छुट्टी आ नहीं पाण में गॾु थिया साईं जी क़यादत में निकिरो त खणे अरे भाई गला आपका बैठ गया है ना। कल एक दिन में 16 जलसे मौका अपना बताने के लिए तैयार नहीं फिर भी सुबह बुखार हूं साईं मीर साईं कल जॾहिं में घणा जलसा कया वाह चाय वरतो जो तो माण्हू पाण में करे सघंदो चाय जो खायो थधो बि चाय बि काॾे वेंदव बाबा अहिड़ी महफ़िल बि जाते तो मेरा दलवो सब में तो गड़ी के रवानी है ये अहिड़ी महफ़िल बि आहिनि हाणे न मिलंदव शाम जो काथे मिले उम्मीदवार बि विहारे न तमामु हाणे तव्हां साहिब जो कमाल आहे जेके विहारे तू भी हिकड़ी ॻाल्हि कर ॻाल्हि तू भी सरदार अल्लाह जी महिरबानी सां सिंध बलोचिस्तान में राज रहे तो ॿुध मुंहिंजो इन में मुंहिंजो ई मसलो थी वेंदो हा तॾहिं चवां तूं सरदार आहे सिंध बलोचिस्तान जो राज रहे तूं जेको फ़ैसिलो कंदे ॿिन्ही में हिकिड़ो सीट जता पंहिंजी बिरादरी जो आज़ाद करे छॾियो आहे बस आज़ाद हा बस सरदार साहब फ़ैसिलो आप ही तो सदर जब्त करें अरे ये हमारे तो We don't want to leave you behind. जिंदाबाद जिंदाबाद मेहरबानी वापस You make alliance with lot of party to win election. Yes, you see, even the two gentlemen who were sitting there, one was from a different political party, a candidate, and the
the older gentleman who came, he was also his rival. But the advantage was that they've all teamed up. I mean, they're fighting against one another, but as far as I'm the candidate, they're all in my favor because they were provincial candidates. So both the gentlemen who came in, one was a young guy with a beard, chubby guy from the MMA party. From the MMA party, and Mr. Nasir Khan Khoso from the Pakistan Muslim League functional. So I mean, they are competing against one another, but for the MNA, they both are supporting me. So I mean, I would say I've been very lucky in that context that I've had majority of the parties, political parties, either withdrawing their candidates or not putting up a candidate against me. Okay, and what's about the man who, the chief, tribal chief? The tribal chief? Yes, he was there too. Pardon? He was there. He was there, yeah. Yeah. And that was his house. Too? But yes, that's why he invited me over to his house. That he's invited all the notables of his tribe in different areas, and he's invited them over to inform them that they should vote in my favor. See, because over here the tribes, if one particular tribe stands up, you need to have support from other tribes. Then there's always a feeling that you're going to support your own tribe. The advantage I have is, because I do not belong to any particular tribe, I'm a friend of all the tribes. Okay. So they feel he's a neutral man. If he comes in, and obviously they've seen the way, I mean, I've picked up over here, so they feel, yes, if this person genuinely comes on ground, he will assist all the tribes. Hello. Walaikum salam ji. जी खान साहब अलहमदुलिल्लाह जी बताएं. हाँ कट्टा कौम की जी हाँ सर शॉर्ट बताएं करना क्या है हुक्म. बंगले के बाहर पूछने वाला हूँ. सर बंगले पे रख लें मैं बाहर अब जाना छोड़ दिया. हाँ बंगले पे बशीर भाई से कंफर्म कर लें, ले आए उनको. ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया. Revolution in this district, which is not very difficult. Provide them good quality of seeds, good fertilizers, good farming techniques. Roughly, we would say in rupees terms, it's about 1.5 billion rupees can be an increase in the disposable income of the people annually, just in this district. I mean, these are facts and figures that we've come up with. So based on that, there's a lot that can be done. If anybody's sincere, things will change here. But okay, I follow you. Sure, come. This is our nerve center. What we've done is we've taken a CD from the Election Commission, which has the list of the polling stations and the vote register, the votes that have been registered on the polling stations. We had a software developed. Through the software, we've run the voting register. What we have found is duplicate records, which we're actually printing out as we speak. I'll show you a copy here. Just picked up a paper on random. What it does is, this is the polling station number and a copy of the polling register page. That on page number 22 of 89, you have this particular ID card number, which has been repeated on the adjoining polling station 503, serial number 1317, exactly the same ID card. So clearly shows clear evidence of duplicate records. This is now touching more than 37,000. We're printing them out to hand it over to the authorities. So all you see over here are the printouts coming through. So we know exactly the areas in which they're doing it. What they've done is, polling stations are about 6 to 8 kilometers apart. So there'll be a team of people with their ID cards. They'll visit one polling station in the morning. 20 minutes later, they'll hit the second polling station. Half an hour later, they'll hit the third one, and they'll go around in a circle. They'll visit on an average 3 to 5 polling stations, cast their vote. Now, I could have the best polling agent sitting there, but they would not have the faintest idea that this particular person has already visited 3 polling stations and has casted his vote. So if you've got 1,000 people roaming around on 4 polling stations, that's 4,000 additional votes that they'll cater for. So that's pre-poll rigging. And this is part of pre-poll rigging. Okay. Polling station number, right?
polling station number. This is the list of the polling station. Now you can see the ID card number 401483175544, age 59, their family numbers, serial number, and this is the page number of the polling station. Now this same exact ID card would exist also on polling station 102 as well. That's the next one in line. Same ID card number 401483175544, 59 age, serial number, and on page number 40 of 56 of this polling station. That means the same ID card number exists on two polling stations, on polling station 9201001 and 102. Simple. Perfect. My last question is, I hear about another fraud. It's a party, I know who is here, a party casts the vote of people who live in the district or who live abroad. Do you fight against this fraud too? No. I'll tell you why. Because if somebody is talking about somebody who is living outside the country, that is wrong. Because predominantly people living in Sindh do not move out of their cities. They live over here, they're not overseas Pakistanis. If you visit Europe, US, Dubai, you will hardly find any people from the province of Sindh, mainly from Punjab and NWFP. In our particular district, what has happened is we have concrete evidence that at one person's residence, a machine has been put up to print out ID cards. They have printed out 8,500 ID cards. We have passed information to the relevant departments that this activity has taken place. It is the same locality where previously fake currency notes were being published, which the police raided and arrested the people. So we're hoping that they can curtail them, but I mean this element of rigging exists at such a large scale, and you need to be really scientifically being able to hold on to these people. So we're really putting our foot down. We're coming up with concrete evidence, absolutely accurate evidence that where this pre-poll rigging has taken place and how will it affect the polling date. Okay, one more question, Sure. please. Could you fight this fraud all around Punjab or only here? No, we can. I believe if the concerned department is there, it wouldn't be very difficult to fight all over Pakistan. But like you say, if you do not want to do anything, you'll find a million reasons not to do it. But if you want to do something, all you require is a wish. If you have the will and the wish to do something, you'll do it regardless of what the odds are. So in our case, we had the will and we wanted to do it, and with the grace of God, we were able to do so. Because we have nothing to do with pre-poll rigging, because I was nominated as a candidate 2 days prior to the election last submission days. Okay, really the last question. Yeah. It will be possible to cast the vote with a photocopy of the ID card? That I'm not sure about, to be very honest. What I do know for sure is that they've allowed people to use their old ID cards. So what's going to happen is, if I had an old ID card and a new ID card, so I can take both of them and cast double votes now. So that's a disadvantage which has come. Secondly, duplicate ID cards, yes, people are making them, they exist in the system, but this is not individuals who are doing it. This is based, you need a lot of funds to do this. I mean, you need to have at least roughly, I would say 200 rupees, roughly $3 you need to have to spend to create a fake ID card. So if somebody is creating them in the thousands, would need to have a lot of money to do so. So these are people with hefty pockets, people who've been in politics, made good money out of politics in order to spend this kind of money.